Alright, ji. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. This is your host today, Sayyid Muhammad Hassan Ali, Head of Admissions, Rashid Latif Khan University. Today we're going to start our session with the introduction of Rashid Latif Khan University and its background first. Then I will introduce Professor Dr. Nashi Khan, our expert panelist today, and I will ask her to briefly introduce herself as well, and then we will go to the BS Clinical Psychology, its perspectives, its future prospects, its career path, and what are we offering in our psychology program. Alright, let's start with the Rashid Latif Khan University introduction. Rashid Latif Khan University's background is also important to discuss. Rashid Latif Khan University is part of Rashid Latif Khan Associates. Rashid Latif Khan Associates is serving Pakistan and Pakistani nation from past 30 years in the sector of health and education. In Rashid Latif Khan Associates, we have 3 hospitals on board: Hamid Latif Hospital, RF Memorial Hospital, and Hamid Latif Teaching Hospital as well. And when it comes to the education sector, we have Rashid Latif Khan Medical College, Rashid Latif Khan University Medical College, and Rashid Latif Khan University as well. And we also have network of Hamid Latif laboratories. Already this was the introduction of Rashid Latif Khan Group. Now we will move forward to the Rashid Latif Khan University. Rashid Latif Khan University is an HEC chartered university and is offering 15 bachelor's and 2 MS programs in various fields. When it comes to the salient feature of the university, that why you guys should choose Rashid Latif Khan University, there are multiple salient features that I'm going to share now. We have purpose-built campus of on 28 acres. We have a library of 300 plus student capacity. We have 100 e-library computer with us. We have hostel facility in campus with us. We have transport facility. We have state-of-the-art, well-equipped laboratories. We have air-conditioned lecture theaters. We have auditorium of 600 plus sitting capacity. We have sport arenas, and in sports arena we have cricket ground, badminton, basketball courts, and we do have a beautiful mosque in campus as well. And obviously we have cafeterias and food courts in campus as well. So this was the brief introduction of Rashid Latif Khan University and its group. Now we will move forward towards the introduction of our expert panelist, Professor Dr. Nashi Khan. Before she gave you her introduction, I would like to give you the introduction and achievements, an overview of her achievements. She is a PhD doctor. She is a PhD in psychology, and she also have done postdoc. She is academic director at Rashid Latif Khan University. She is an HEC approved supervisor. She is a dean of Faculty of Social Sciences in Rashid Latif Khan University. She is also a director and HOD of Rashid Latif Department of Professional Psychology. She is also director of Counseling and Wellness Center, and she is an elected president of Pakistan Association of Clinical Psychology. When it comes to her education, she has her postdoc from London, and she has her PhD from UHS, Lahore, Pakistan, and she have also 2-3 masters. And when it comes to the research publication, she have 40 plus research publications in approved journals. So first of all, I would like to say thank you to Professor Dr. Nashi Khan for joining us today on this session, and I will request her to briefly introduce herself first, and then introduce the faculty and the BS Clinical Psychology, that what are the course outline, what are the fee structure, what are why the BS Clinical Psychology of Rashid Latif Khan University is different from other universities, and what are the future prospects of psychology and clinical psychology in Pakistan and in all over the world. Assalamu alaikum ma'am, kaisi hain aap? Assalamu alaikum Ahsan, thank you so much. You're welcome. I think Ahsan has introduced me
quite a bit long, so I would just start with my name. My name is Nashi Khan. I am heading Rashid Latif Department of Professional Psychology, which has to be introduced most importantly for this session. The Rashid Latif Department of Professional Psychology was first founded in year 2022, and it was, alhamdulillah, affiliated with the University of the Punjab as well. The second batch was admitted and started in fall 23. We have, alhamdulillah, 90 plus students in both our batches. The essence of the Rashid Latif Khan Department of Professional Psychology is that we just do not teach, we transform. We transform because we are the clinical psychologist. अगर मैं एक आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की अंग्रेज़ी में तो डेफिनेशन बड़ी आसान है कि इट इज़ द clinical psychology which is being practiced in the hospitals and different places. But अगर मैं एक आम फहम चीज़ में कहूँ तो मुझे इसके लिए एक शेर याद आता है, तपस की तीलियाँ रंगीन क्यों हैं, यहाँ पर सर को फोड़ा है किसी ने। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ वो लोग जो पेन में हैं, जो डिस्ट्रेस में हैं, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स में हैं, वो ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। मेरे मुताबिक, मेरी फ़िलॉसफी के मुताबिक ये मेडिकल प्रोफेशन से भी ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि मेडिकल में तो गायनी में कोई जाएगा तो उसके बच्चा पैदा होगा तो बहुत खुशियाँ होंगी, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास कोई खुश नहीं आएगा। वही बात कि तपस की तीलियाँ रंगीन क्यों हैं, यहाँ पर सर को फोड़ा है किसी ने। लोग सर फोड़ने हमारे पास आते हैं, अपनी तकलीफ़ें लेके हमारे पास आते हैं। We have alhamdulillah started BS Clinical Psychology in Rashid Latif Khan University, headed by me. मेरा एक छोटा सा और तारुफ है कि I am the only chartered clinical psychologist in Pakistan. Our BS program is unique, not because it is headed by me, because we have a brilliant team, we have a brilliant infrastructure, we have brilliant labs, and we have a brilliant scheme of studies which we have tailor made to train our students to be good clinical psychologists. We teach clinical training in top teaching hospitals of Lahore. We groom students for our own university, जो motto है हमारा champions का, RLKU champions का. Our course module has that module also, in which the grooming is very important. The champions means critical thinking, the champions mean so many things, it comes under that logo, and we create a unique population. RLDP, BS Clinical Psychology, consists of 4 semesters, 7 semesters. It's a 4-year program. The induction criteria is 45% marks to begin with. We need intermediate with 45% percentage, and we offer 100% scholarship, merit-based scholarships, and need-based scholarships as well. We train students in the most highly equipped psychological and experimental lab, which are worth crore. And we teach students for psychological testing, for psychological assessment, and clinical research. Most importantly, in the era of today, where the distress is not only the distress caused by the psychiatric illness, it is the distress caused by the society, it is the distress caused by the economic pressures. Everybody is under the pressure. So the role and the future of clinical psychology has become very vital now in all the institutes. Our career paths are very brightened, they are very promising, and we have come to a stage that at the moment the ISI needs us, the armed forces needs us, the prisons needs clinical psychologists, the NGOs needs clinical psychologists, the
major organization need the psychologist, and above all, according to the latest policy of Higher Education Commission, it has become mandatory to hire a clinical psychologist even in the schools, in the colleges and in the universities. Universities as well. So I would say that another thing, why us? Why your student या आपका बच्चा या आपकी बहन या आपका भाई हमारे साथ दाखला ले? मैं तारीफ़ तो हर इंसान अपनी करता है, बट मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि इस डिपार्टमेंट में एथिकल प्रैक्टिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इस डिपार्टमेंट में पढ़ाने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इस डिपार्टमेंट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्लास ना हुई हो, इस डिपार्टमेंट की क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई थिंक आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि पाकिस्तान में कहीं भी इतनी अच्छी नहीं हो रही। Very nice. आप आजमा के देख लें, हमारे प्रीवियस एम्बेसडर्स से पूछ लें, आप किसी को भी, आप खुद आके देखें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप खुद आके देखें हमारी लैब्स, आप खुद आके देखें हमारी फैकल्टीज़ विच इज़ द क्रीम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। और मैम ये मैम ने बड़ी 2-3 अच्छी बातें इसमें बताई। अच्छा मैम, एक ना जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं जो जिन्हें FAQs बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो ये उसमें ना एक तो ये होता है कि पीपल डू आस्क, स्टूडेंट डू आस्क कि जी ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है एंड अप्लाइड साइकोलॉजी या सिंपल साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, कि इनमें तीनों में क्या कंफ्यूजन है कि क्लिनिकल कहाँ पे होता है, अप्लाइड कहाँ पे होता है और सिंपल साइकोलॉजी क्या होती है? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल किया एहसन आपने। थैंक यू मैम। साइकोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है और इसमें बेशुमार स्पेशलिटीज़ हैं। साइकोलॉजी इज़ साइकोलॉजी, ठीक है, दैट इज़ लर्निंग ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दैट। इसकी आगे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Yes, why clinical psychology? In clinical psychology, we give the training to the psychologists to practice, to see patients, to see clients with the, जैसे मैंने कहा कि जो लोग तकलीफ़ में होते हैं वो ज़रूरी नहीं ज़हनी बीमार हो। जैसे आपने बात की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, इसमें एक मिथ भी है। अगर आप किसी को कहते हैं कि आप प्लीज़ हेल्प ले लें काउंसलर की या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, तो एक मिथ है कि मैं कोई पागल हूँ। वी ऑल नीड हेल्प, वी ऑल नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। सो द रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज़ दैट वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स to be good clinical psychologists, and that training takes place under top teaching hospitals of Lahore, under supervised certified clinical psychologists, and they get hands-on training plus research in this program. तो डिफरेंट ये है कि जो बाकी साइकोलॉजी है, अप्लाइड है, जनरल साइकोलॉजी है, फोरेंसिक है, इसमें हम क्लाइंट्स या पेशेंट्स नहीं दे सकते। ये उतना ही नोबल प्रोफेशन है, बल्कि उससे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि बाकी मेडिकल है, गायनी है, उसमें लोग रोते तो नहीं आएंगे, हमारे पास तो आंसू के बगैर किसी ने नहीं आना। सो ये इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एज और इसकी बहुत ज़्यादा दुनिया में प्रमोशन हो रही है। रेफरेंस टू बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एसोसिएशन है ये लाइसेंस देती है, जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, to be certified clinical psychologist, and this association is the only association in Pakistan जिसकी licensing Middle East में पूरी दुनिया में मानी जाती है। So we get the edge कि the clinical psychologist जो बनेगा उसके लिए job options मिडल ईस्ट में भी हैं, इंग्लिस्तान में भी हैं, कनाडा में भी हैं, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितना स्ट्रेस, जितना तकलीफ़, जितने मसाइल, चाहे वो इकोनॉमिक हैं, चाहे वो वॉर है, चाहे वो टेररिज्म है, it all involves psychological pain and distress. So the role of clinical psychology becomes vital and inevitable. Alright मैम, थैंक यू। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन जो है, जो कि पहले भी बता कि जो स्टूडेंट है वो ये क्वेश्चन करते हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे कि आपने कहा था कि जी जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस
in Lahore, in Yeah. Pakistan, in Yeah. Punjab Yeah. that are offering BS clinical psychology Yes. right now. Yes. So وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے پاس کیوں ہیں, آپ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں. ایک تو پروفیسر ڈاکٹر ناشی خان کا تو نام ہے ہی, تو what are the other perspective, what are the other salient features that we are offering, کہ یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا بریف سٹارٹ میں کیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیں کہ ہم کیوں. ہاں, میں نے پھر دوبارہ یہ کہوں گی کہ ہم کیوں. میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ جو باقی انسٹیٹیوٹس میں کلینکل ٹریننگ ہو رہی ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی یا غلط ہو رہی ہے. سب یونیورسٹیز اچھا ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم کیوں, اس لیے کہ ہماری یونیورسٹی کی ویژن ایک اور پرسپیکٹو سے چلی ہے. ہم نے سوچ لیا ہے کہ یہاں سے چاہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ نکلے یا کوئی بھی نکلے, وہ ہمارے چیمپئنس ہوں. ان میں انٹیگریٹی ہو, ان میں پرسیویرنس ہو, ان میں کرٹیکل تھنکنگ ہو, ان میں ہیومیلٹی ہو, ان میں نوبیلٹی ہو, اور ان میں موٹیویشن ہو. That's very nice. That comes to call it RLKU champions. That is why we are different. And this champion thing is carried out in at least Rashid Latif School of Psychology in the timetable vigorously. Thank you. اچھا میم, ایک لاسٹ کوشچن سے بی ایس کلینکل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اٹس اے 4 years ڈگری پروگرام اینڈ کنسیڈرڈ آف 7 semesters, ٹھیک ہے. جو لاسٹ 6 months ہوتے ہیں, لاسٹ سیمسٹر ہوتا ہے, اس میں کیا انٹرنشپ ہوتی ہے, پروجیکٹ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں ہم 3 طرح کے HEC کی انڈر گریجویٹ پالیسی کے حساب سے ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے, جس میں سب سے پہلا میجر جو اسپیشلٹی ہے, صحیح ہے, پھر اس میں انٹر ڈسپلنری بھی ہیں جو ہیں, اور تیسرے جنرل سبجیکٹس ہیں جس میں HEC نے پاک اسٹڈیز اور پاکستان آئیڈیالوجی کا بھی کانسیپٹ دیا. یہ تو ہم نے انٹیل کرنے ہی کرنے. بٹ ان دا لاسٹ 3 semesters, like when we get into the 4th, 5th semester, we start the clinical training. We expose the students to the clients, which we call patients, but nowadays the word client is not, patient is not used, and we say client. We expose them to the patients, we ask them to write reports which are called clinical reports, and the research component relating to clinical psychology is important. That's very nice. اس کا crux یہ ہے کہ ان راشد لطیف خان یونیورسٹی ہمارا صرف ایکڈیمکس پہ زور نہیں ہے. وی بی ایس ان کلینکل سائیکالوجی, ہم یہاں پہ اسکلس پہ بھی کام کرتے ہیں. جیسا کہ میم نے کہا کہ جو 2 years ہیں وہ پیورلی ایکڈیمک کے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد 2 years جو ہیں اس میں ہم آپ کے اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کو پریکٹیکل نالج, جیسے رپورٹ رائٹنگ ہے, آپ کا ایکسپوجر ہے جو کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ پہ ہے, اسیسمنٹ پہ ہے, ڈائگنوسس پہ ہے, انٹیلیجنس ٹیسٹ میں, اور پھر اینڈ میں وہی کہوں گی, وی ڈونٹ جسٹ ٹیچ, وی ٹرانسفارم. دیٹس ویری نائس, اور دیٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جس حساب سے دنیا ایوالو کر رہی ہے, پاکستان کی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں, تو صرف ایک بی ایس کی ڈگری ہاتھ میں لے کر آپ وہ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو فوکس آن دا اسکلز, کہ جی جب آپ مارکیٹ میں جائیں, ڈو یو ہیو دیٹ اسکلز کہ جو آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی اپرچونیٹی آپ خود اڑ سکیں. یہ نہیں کہ آپ پھر ڈپینڈنٹ ہو گے جی آئی ول گو فار دا فردر ڈگری اینڈ دین دا فردر ڈگری. تو ایکڈیمکس ہو نہیں, اسکلز پہ فوکس ہمیں سب کو کرنا چاہیے. تو we have very short time, so I will conclude this session with thanks to Professor Dr. Nashi Khan for joining us today and for such informative session. اور دوسری یہ کہ our admissions are open and you can apply on admissions.rlku.edu.pk. You can visit us as well. We are located on main Firozpur Road, 35 kilometer Firozpur Road, and it is near to Central Park. And our telephone number, our contact number is 924211626262. I will repeat myself, 924211626262. Thank you so much, ji. Allah Hafiz. Thank you.